गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले वॉइस आसुचे गोटे चैट बॉक्स रे मेसेज दे दियो। ओके, आज आम डिस्कसन करवा +3 फिफ्थ सेमिस्टर कोर 12 पेपर जहाँकि अटे आमर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आमर दुईटा पेपर थाए, गोटे फिफ्थ सेमिस्टर रोचे आ गोटे रोचे सिक्स सेमिस्टर। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रो पाखापाखि जदि देखिबो 10टा पाखापाखि क्वेश्चन आसथाए। आसंतु देखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू। Question number 1. The development process that protect future generation needs is called जो डेवलपमेंट प्रोसेस फ्यूचर जनरेशन रो नीड्स को कौन कर थाए ना प्रोटेक्ट करि थाए ताको हमें कौन कहबा। फ्यूचर को जे प्रोटेक्ट करे प्लस प्रेजेंट जनरेशन रो डेवलपमेंट करे ताको कहा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Development of the present generation without compromising ability of the future generation to meet their needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डेफिनेशन जहाँ अच्छी तो किए देइथिले? अमर्त्य सेन देइथिले ना डी मोरिस देइथिले ना ब्रुटलैंड कमिशन देइथिले ना यूएनडीपी देइथिले? ये क्वेश्चन बहुत समय आसता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट सब क्वेश्चन रे अछि। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के देइचंदे पहले ब्रुटलैंड कमिशन देइचंदे। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कोथ रही था। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ना जीडीपी ना रियल नेशनल इनकम ना एक्सपोर्ट। कौन हम पहले रियल नेशनल इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिप्रेजेंट gradual improvement, discontinuous and spontaneous change, zero growth, na increase in population. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हला कौन गोटे डिसकंटिन्यूअस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। The achievable growth of an economy is called जेति के अचीव करी हबो। The achievable growth of an economy. The achievable growth of an economy कौन कहा जाए ताको? Potential growth. Economic development includes only national income, GDP only, economic growth and social welfare na urbanization. Economic development includes quota economic growth and social welfare. National income divided by population कौन कहा जाए? नेशनल इनकम को पॉपुलेशन रे डिवाइड कले कौन मिले? पर कैपिटा इनकम मिले था। Investment is identical with capital loss, capital expenditure, physical capital formation na income formation.
इन्वेस्टमेंट कौन हो एटा कैपिटल फॉर्मेशन फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन द थ्योरी ऑफ VCP vicious circle of poverty was given by the theory of VCP was given by के देइतले vicious circle of poverty रागनर नॉक्स स्टेटमेंट देखिए ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर से VCP रो ये स्टेटमेंट ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर PQLI फुल फॉर्म कौन PQLI कौन हम PQLI है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQLI किए डेवलप करथिले PQLI के डेवलप करचंती डी मोरिस कंपोनेंट ऑफ PQLI कंपोनेंट रो गोटे क्वेश्चन आसे PQLI नले HDI जो थिरले गोटे क्वेश्चन आसे कंपोनेंट देखि देथिबो PQLI रो कंपोनेंट रे कोन कोन जाउतला लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिक लिटरेसी इन्फेंट मोर्टालिटी HDI रो फुल फॉर्म कौन हम HDI ह्यूमन डिमांड इंडेक्स ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना ह्यूमन डाइवर्सिटी इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के डेवलप करथिले HDI वाज डेवलप्ड बाय के डेवलप करचंती अमर्त्य सेन और महबूब उल्हक एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले देख भल भल ये पड़ी था कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन ये UPSC रे आसला HDI रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इंडिकेटर ऑफ HDI इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट क्या को इंक्लूड करूनी क्या को इंक्लूड करूनी आ भीतर लॉन्जिटिविटी इंडेक्स एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स रियल GDP पर कैपिटा तक जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कह जाए इंक्लूड कोटा करूनी पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स ना इंडिया रैंक केते थिला 22-23 कि 23-24 दुटा का समान थिला इंडिया रैंक केते अछि 22-23 और 23-24 रे 134 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो HPI कौन हम फुल फॉर्म HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI केबे इंट्रोड्यूस कराई UNDP करिছে ना HPI वाज इंट्रोड्यूस बाय UNDP को मसिया हेतला HPI was introduced by UNDP in the year कब कराई 97
HPI is most useful for measuring deprivation in developed country ना developing country ना poor country ना middle income country को केसरा को यूज करा जाए को कंट्री पाई HPI यूज करा जाए डेवलप्ड डेवलपिंग पुअर कंट्री मिडिल इनकम कंट्री कहाँ पाई आप कह जाए डेवलप्ड कंट्री पाई HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स टा टिके देखिबो पढ़ी दबो टिके HPI टा डेवलप कंट्री दौचे डेवलपिंग भी बोधे नहीं आ जाए GDI stand for GDI होची हमरो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI GEM कौन GEM GEM हला हमारा जेंडर एम्पावरमेंट मेजर GEM GDI और GEM के डेवलप करचंदी GDI और GEM जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर एम्पावरमेंट मेजर के डेवलप कले UNDP GEM मेजर्स GEM कौन मेजर करे लिटरेसी गैप ना एम्प्लॉयमेंट रेट ना इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन ना फर्टिलिटी रेट GEM कौन मेजर करिवो जे मेजर करिवो इनइक्वालिटी मेजर करे बिटवीन मेन एंड वुमेन MPI कौन पेले MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI को किए पब्लिश करुची MPI इज पब्लिश्ड बाय UNDP सबू UNDP है जहाँ इंडेक्स आसला UNDP लिखिदेव इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन केते अछि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अच्छे केते इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन $2.15 पर डे देख लो एटा अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमिटी अर्बन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया केते रंगराजन कमिटी रिपोर्ट है दुईटा अलग अलग आसे रिपोर्ट कार तेंदुलकर गोटे अच्छे आ गोटे रंगराजन हिसाब रे अर्बन पॉवर्टी है 47 थी आ तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट हिसाब रे रूरल पॉवर्टी लाइन केते हम तेंदुलकर कमिटी एटा तेंदुलकर रूरल पॉवर्टी लाइन तेंदुलकर रूरल पॉवर्टी लाइन केते 27 और कैलोरी इनटेक बेंचमार्क फॉर रूरल पॉवर्टी रूरल एरिया रे केते कैलोरी दरकार रूरल रे केते दरकार कैलोरी 2400 रूरल रे 2400 अर्बन रे हला तटा केते रे 2000 रूरल रे 2400 अर्बन रे
2100 दरकार अर्बान 2100 2400 ओके अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन ओन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स केते अमर्त्य सेन को मसिया नोबेल प्राइज पाइथिले इकोनॉमिक्स रे अमर्त्य सेन केबे पाइथिले नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स रे अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 1998 रे हला अमर्त्य सेन हले फर्स्ट इंडियन टू गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स गिनी कोफिशिएंट ये कौन इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट ये इंडियन इकोनॉमी रे भी थिला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट केते रहइबो 0 रु 1 भितर रहइबो 0 रिप्रेजेंट करिवो कौन 0 0 रिप्रेजेंट करिवो परफेक्ट इक्वालिटी हला 0 माने इक्वालिटी इनइक्वालिटी किछि नाही 1 रिप्रेजेंट कर दबो परफेक्ट इनइक्वालिटी annual addition to capital stock कौन कह जाए annual addition to capital stock capital formation gross capital formation includes replacement capital and कौन gross capital formation includes replacement capital and physical capital na depreciation na net investment na total saving gross replacement capital plus net investment deficit financing involve printing more currency na exporting capital na increasing interest rate cutting government spending deficit financing रे कौन करा जाए प्रिंटिंग मोर करेंसी इन हैंड द टर्म इनविजिबल हैंड किए देथिले इनविजिबल हैंड Adam Smith जेवी सेज लॉ इज स्टेटेड एज सेज लॉ जोटा कह जाए सेज लॉ ऑफ मार्केट सेज लॉ कौन थिला सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड द कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी के देथिले सरप्लस वैल्यू एंड इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी के देचंती कार्ल मार्क्स in Mcqs theory organic composition of capital is defined as by denoted by कौन organic composition of capital कौन थिला organic composition of capital थिला C by V constant capital divided by variable capital कैपिटलिस्ट क्राइसिस के डेवलप करथिले कांसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइसिस कैपिटलिस्ट क्राइसिस कैपिटलिस्ट क्राइसिस के देचंती ना एठे कंफ्यूज होबनी
कैपिटालिस्ट क्राइसिस जदि कहला ताहले हला कार्ल मार्क्स, जदि कहिछि डिके ऑफ कैपिटलिज्म ताहले हला सुम्पिटर हला। वर्ड गुडा समान सबुची, गोटे होची कैपिटालिस्ट क्राइसिस हला। कैपिटालिस्ट क्राइसिस माने मार्क्स, जदि कहि थांता डिके ऑफ कैपिटलिज्म ताहले ही थांता सुम्पिटर। एठी आसी गला सुम्पिटर। थ्योरी ऑफ इनोवेशन के देचंते, थ्योरी ऑफ इनोवेशन देचंते थ्योरी ऑफ इनोवेशन सुम्पिटर। हु स्टेटेड दैट इनोवेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, के कहिथिले? सुम्पिटर। सुम्पिटर पढ़िला माने थ्योरी सब रिलेटेड टू इनोवेशन थिबो, बुझिपार। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक स्टेजेस के देइथले? इकोनॉमिक स्टेजेस थ्योरी के देइचंती? इकोनॉमिक स्टेजेस डब्ल्यू रोस्टो। फाइनल स्टेज कोटे? फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोटा? फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज ऑफ हाई मास कंजप्शन तक अच्छा। हाई मास कंजप्शन ड्यूरिंग द टेक ऑफ स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सीड। टेक ऑफ रे इन्वेस्टमेंट केते हुए? ड्यूरिंग द टेक ऑफ स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सीड केते हो? 10% एक्सीड करे। In the stage of high mass consumption, which indicator is high? Unemployment, poverty, per capita income, inflation. को इंडिकेटर टा अधिका थाए हाई मास कंजप्शन रे? पर कैपिटा इनकम। सोलो मॉडल इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर, ये आस्थला यूजीसी नेट क्वेश्चन टा। सोलो मॉडल इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सोलो मॉडल इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर का क्रिटिसाइज करी कराइतला? हारोड डोमार। हारोड इक्विलिब्रियम को कौन कह जाए बेले? बैलेंस पाथ, गोल्डन पाथ, नाइफ एज इक्विलिब्रियम ना पॉवर्टी ट्रैप, कौन कह जाए? हारोड इक्विलिब्रियम इज नोन एज कह नाइफ एज। रेजर एज भी कह जाए, रेजर एज ना नाइफ एज कह जाए। एटा कौन? इन हारोड डोमार मॉडल ग्रोथ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज। हारोड डोमार मॉडल रे ग्रोथ रेट रो फार्मूला कौन थिला? ग्रोथ रेट हारोड डोमार मॉडल रे कौन थिला? स्मॉल एस बाई भी थिबो, बुझी पारलो? स्मॉल एस बाई भी थिबो, स्मॉल एस बाई भी थिबो। एठी भी हेथिबो कैपिटल आउटपुट रेशियो। स्मॉल एस को आमे एपीएस की एमपीएस आकार नहीं परिबा हला, दुईटा को समान थिला सेठी। तेणु एमपीएस की एपीएस नहीं जिबा स्मॉल एस, भी हला कैपिटल आउटपुट रेशियो। स्मॉल एस एठी तला हारोड डोमार मॉडल रो स्मॉल एस टा कौन हबो? हारोड डोमार मॉडल रे स्मॉल एस टा हला हमर सेविंग हला। नाइफ एज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम जो आसुची, नाइफ एज प्रॉब्लम टा हारोड डोमार मॉडल रे काहे के आसुची? डिमांड सप्लाई इम्बालांस ना लैक ऑफ इनोवेशन ना रिजिडली डिफाइंड के वाई रेशियो कैपिटल आउटपुट ना हाई इन्फ्लेशन। नाइफ एज प्रॉब्लम आसे रिजिडली डिफाइंड कैपिटल आउटपुट रेशियो
ହେଲା ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ 16 ତାଙ୍କ ମଡେଲରେ। Poverty is defined as excess income, wealth accumulation, inability to meet basic needs na luxury consumption। कौन है जो बेटा inability to meet basic needs। Percentage of people below poverty line is known as percentage of people below poverty line। तो कौन कह लिटरेसी ना हेड काउंट रेशियो ना पॉवर्टी गैप ना ग्रोथ रेशियो। चला हेड काउंट रेशियो। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू रिलेटिव पॉवर्टी आम कहवा क्या एब्सोल्यूट हंगर ना पॉवर्टी इन रिलेशन टू अदर ना लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना फॉल इन जीडीपी। क्या कहवा पॉवर्टी इन रिलेशन टू अदर। गरीबी हटाओ को 5 ईयर प्लान स्लोगान थिला रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को 5 ईयर प्लान काली पढ़ुल 5 ईयर प्लान कोटा थिला 5th 5 ईयर प्लान गिनी कोफिशिएंट कौन थे इनकम इनइक्वालिटी। Relative poverty is measured in terms of fixed threshold na average poverty across nation na socio-economic comparison between groups and countries standard calorie intake। कौन है जो एटा देखा जीवो कंपैरिजन सोशियो-इकोनॉमिक कंपैरिजन। The inverted U hypothesis on development and inequality के देइछंती inverted U hypothesis development and inequality। कुजनेट हाँ कुजनेट कर्व तक कहुए सेप कोटा इनवर्टेड यू सेप रहिबो। तापर क्वेश्चन से अछि सेप ऑफ कुजनेट कर्व इज इनवर्टेड यू सेप। कुजनेट कर्व रिलेट्स का भितर रिलेशन देखाई कुजनेट कर्व इकोनॉमिक ग्रोथ कंजप्शन ना इनकम सेविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनइक्वालिटी ना जीडीपी कैपिटल फॉर्मेशन ओके डेवलपमेंट और इनइक्वालिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज कॉल्ड को कर्व कह जाए जितेबाला इनकम इनइक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा को कर्व कहवा डिमांड सप्लाई लॉरेंज लाफर तो कह जाए लॉरेंज कर्व। Import substitution means importing more capital good, exporter led growth, replacing import with domestic production, replacing export with import। ये कौन है जीवो replacing import with domestic production। According to Knox, disguised unemployment can act as labor loss, employment burden, potential source of saving, capital wastage। कौन can be used as potential sources of saving। ग्रीन रिवॉल्यूशन केबे स्टार्ट होता इंडिया रे 55 ना 60 67 ना 70 ग्रीन रिवॉल्यूशन केबे 67 पाखापाखि। द अपेक्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन कौन द अपेक्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया नाबार्ड एफसीआई नाफेड ना आईसीएआर।
Apex Cooperative Marketing Institution नाबार्ड सब कौन कौच रे ये कौन बैंक एरा नाफेड नाफेड आसला पूर्व वर्ष क्वेश्चन देख 2024 कि 23 कोथरे थिला नाफेड एटा आसला एई क्वेश्चन टा आसला 23 कि 24 रे ता फुल फॉर्म कहलो कोटा हबो नाफेड स्टैंड फॉर नाफेड कौन है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया किए अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट अपेक्स इंस्टीट्यूशन किए एबे आसीबा नाबार्ड है ना एबे को नाबार्ड रो फुल फॉर्म कौन थिला नाबार्ड रो फुल फॉर्म कौन नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होला रूरल डेवलपमेंट कबे एस्टैब्लिश होइतला नाबार्ड was established in the year 1982 बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स आर मेंटेन बाय बफर स्टॉक किए मेंटेन करे नाबार्ड नाफेड एफसीआई आरबीआई बफर स्टॉक करछि एफसीआई ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केबे एस्टैब्लिश होइतला एफसीआई एफसीआई केबे एस्टैब्लिश होला 1965 Agmark relates to agricultural commodities, standardization of agricultural product, agricultural marketing board, na procurement pricing. Agmark. Agmark relates to standardization of agricultural product. Agmark is a certification mark under the control of कहा control रे था Agmark टा नाबार्ड रो ना FCI रो ना डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन रो ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो कहा कंट्रोल रे रहइबो कहा कंट्रोल रे डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय के प्रिपेयर करछ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ठीक होची ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एम्स कौन ऑब्जेक्टिव कौन आरटीआई रो increase subsidy reduce export ना promote transparency and reduce corruption increase tax base कौन करेंगे promote transparency and reduce corruption लोकपाल एक्ट
कौन एम अच्छे लोकपाल एक्ट promote agriculture ना regulate industry ना tackle corruption कौन भाई tackle corruption poverty that results from comparison with other एटा क्यों को poverty थिला comparison माने एगला relative poverty main objective of economic planning in India increase defense spending reduce economic disparity control population increase privatization कौन हबो reduce economic disparity national income is a measure of only agricultural output total money supply overall economic performance only industrial output oh no overall performance of an economy or nation HDI रे कौन जाउछ रे HDI Human Development Index literacy life expectancy income gender inequality is best measured by GDI GDM ना GDP HDI CPI कौन होगा GDI GDM GM real GDP is adjusted for nominal GDP को कहा सहित adjust कले real GDP बाहर थाए टैक्सेशन सहित ना इन्फ्लेशन सहित ना सब्सिडी सहित ना इंटरेस्ट सहित इन्फ्लेशन infant mortality is an indicator of agricultural productivity health development unemployment industrial development infant mortality कहारो मेला health development who among the following focused on welfare economics and capability approach welfare economics and capability approach welfare economics and capability approach welfare economics के अमर्त्य सेन The term capital output ratio is found in which model? Mcqs model, Hardomar, ना Keynesian ना Rostow. कोठी यूज कराइतला capital output ratio. Capital output ratio. Hardomar. Which of the following is not part of HDI? HDI रो part नुह कोटा हबो trade to GDP ratio which index replaced the HPI किए रिप्लेस कला HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को किए रिप्लेस करछि HDI MPI GDI GEM के रिप्लेस कला HPI को ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस कला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट हिसाब रे अर्बन पॉवर्टी केते तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट
तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट अर्बन पॉवर्टी है 33 Lorentz curve is drawn between income saving, consumption investment, cumulative population and income, employment and output. Lorentz curve. Lorentz curve कौन देखा रे पिले population और income. Five stages of roster growth include all except traditional society take off, golden age, mass consumption. Five stages of roster's growth model. कोटा include core index है ना golden. Discussed unemployment is mostly found in which sector? ये काली जाइथिला क्वेश्चन एग्रीकल्चर रे इंडियन इकोनॉमी रे थिला एग्रीकल्चर सेक्टर. Who stated that capitalism would eventually collapse? Collapse of capitalism के देचंती by decay of capitalism. Collapse or decay of capitalism. Schumpeter. Eventually collapse Karl Marx देछि किंतु जदि देखिबा जदि decay of capitalism दबो होला ताले हे जिवो Schumpeter. Decay of capitalism थिले Schumpeter हबो. According to Schumpeter, economic growth is driven by Schumpeter कौन थी Schumpeter theory माने innovation हबो. एटा जाइछ Gini coefficient is 0 से कौन हबो perfect equality. High value of Gini coefficient represent Gini coefficient value जते बढ़िबो से कोन करिवो सेते अधिका inequality शो करिवो. Development economics primarily focus on कौन हो बेटा development economics mainly focus on कौन हो रे पहले poverty alleviation. Economic growth refers to qualitative changes na increase in real output or income na social changes na political stability. कौन है जो growth टा कौन होगा increase in real output or income. Development रे कोउडा आसीबो only economic growth na social political economic improvement na only industrialization. कौन है social political and economic improvement. Major characteristics of UDC underdeveloped countries कौन होबो high per capita income, high productivity, vicious circle of poverty, high living standard. Underdeveloped country कौन देखा जाए VCP vicious circle of poverty. Cumulative causation के देइछने पहिले cumulative causation बताउ circular causation कहउछ cumulative causation और circular causation.
ಅದೇ ಗುನಾರ್ ಮೆಡಲ್ ಅಲ್ಲ ಗುನಾರ್ ಮೆಡಲ್. Which of the following is an obstacle to economic development? Technological progress, poor infrastructure, high literacy rate, urbanization. What? Obstacle to economic development. Obstacle क्या भीतर है ना? Poor infrastructure. Only in, national income measures only income from agriculture, na income earned only by the government, na total income earned by nations people and business, only export income. कौन है जो ये जो टोटल नेशन रो इनकम टा এটা যাইছি क्वेश्चन पर कैपिटा इनकम dividing total national income by population. The basic need approach focused on basic need approach का ऊपर फोकस करतला basic need approach का ऊपर फोकस करिवो basic facility ऊपर health education food shelter and clothing. Capability approach capability approach के ଦେଇଛନ୍ତି अमर्त्य सेन. The three core value of development are core values of development: equality, growth, freedom; sustenance, self-esteem, freedom; power, wealth, authority; justice, peace, liberty. Three core values of development. कौन अब sustenance, self-esteem, freedom. PQLI ये जाइछला क्वेश्चन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ना. Which indicator combines income, education and health? किए इनकम एजुकेशन और हेल्थ नहीं थिला कोटा हम इनकम एजुकेशन हेल्थ कोटा HDI. ଏଇଟା ବି ଯାଇଛି HPI କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି UNDP ହେଲା. GDI कौन हम जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. Capital formation leads to decrease in investment, increase productive capacity, rise in import, none of the above. कौन है जो capital formation increase productive capacity. A VCP vicious circle of poverty implies self-sustained economic growth, na low income leads to low saving, low investment, na high saving leads to poverty, none of the above. कौन है जो VCP low income leads to low saving, low investment. Which is not a measure of economic development? HDI, HPI, CPI किए मेजर नुह इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो हला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI. Development economics as a subject emerged after
कहा पर आसिला डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वार फ्रेंच रिवोल्यूशन ग्रेट डिप्रेशन कहा पर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आसिला कहा पर आसी सेकेंड वर्ल्ड वार पर एमडीपीआई कौन एमडीपीआई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाज डेवलप्ड बाय क्लासिकल थ्योरी के देते आडम स्मिथ रिकार्डो माल्थस ना मार्क्स एंजल ना केन्स हिक्स सैमुएल्सन नर्थस के देजने क्लासिकल इकोनॉमी सब की आडम स्मिथ रिकार्डो मिल माल्थस ए सब Marxian theory of development emphasizes कहाँ ऊपर फ्री मार्केट पॉलिसी ना कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास स्ट्रगल ना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ना बैलेंस ग्रोथ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास स्ट्रगल According to Marx, development is driven by industrialization, class conflict, agriculture, technological progress. Development is driven by कौन होगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट सोम्पेटर थ्योरी सोम्पेटर कौन था थ्योरी फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थ्रू इनोवेशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैपिटल एक्यूमुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ कौन हम सब बड़े इनोवेशन सोम्पेटर थ्योरी आसले इनोवेशन According to Schumpeter, the main agent of economic development is banker, innovating entrepreneur, government, farmer. क्या होगा innovating entrepreneur. Rostow theory of economic growth is known as कौन हो stages of economic growth को Rostow model. The stages where development becomes self-sustaining. कोटा self-sustaining growth कोट हुए development कोट हुए precondition to take off drive to maturity age of high mass consumption कौन हो बेटा take off केतरा स्टेज अछि रोस्टो मॉडल रे केतरा पांचटा सोलो मॉडल इज ए theory of innovation capitalist dynamic long run economic growth na monetary policy सोलो मॉडल innovation na capitalist dynamic na long run economic growth na monetary policy long run economic growth in solo model steady state growth is achieved when population and technology grow faster than capital na capital accumulation exactly offset depreciation na saving rate is zero inflation is stable solo model steady state growth केते बड़ा हुए केते बड़ा होगा capital accumulation exactly offset the depreciation in the solo model technological progress is considered technological progress टा केमती था endogenous exogenous non essential negligible
technological progress in solo model. Technological progress in solo model. Exogenous. Which factor does solo incorporate to explain convergence among countries? Difference in inflation, difference in capital labor ratio, difference in political system, none of the above. Which factor does solo incorporate to explain convergence among country? कौन करते difference in capital labor ratio. Convergence hypothesis suggests that poor countries will grow slower than rich one. A poor country will grow faster than catch up with rich one. Rich country will grow faster. No relationship between income level and growth. Convergence hypothesis. Converge. Poor country will grow faster and will catch up the rich one. हाँ कन्भर्ज कले दीटा जो जॉइंट होचंती हमें कन्भर्ज कहूचे दीटा जो अदर डायरेक्शन रे दीटा जाउचंती ताको हमें कहूचे डाइवर्स. Population growth in the solo model affect क्या affect करे population growth? Saving rate directly ना steady state level of income per worker ना government spending ना taxation policy. क्या affect करिबो steady state level of income per worker. Which of the following is not a feature of classical growth theory? Classical growth theory रे कोटा नथिला. Diminishing return to labor, importance of capital accumulation, emphasis on technological innovation, theory of surplus value कोटा नथिला. Not a feature of classical growth theory. कोटा theory of surplus value के देथिले कार्ल मार्क्स देथिले. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एटा मन रखिथिबो. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के देचंती संपीटर. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन संपीटर. In Rostow stages of growth, which stage involved widespread technological innovation? Which stage involved widespread technological innovation? कोटारे technological innovation widespread बहुत अधिक आई थे कोटारे. कोटारे होगा drive to maturity. The focus of Marxian theory is primarily on Marxian theory. এটা যাইতলা বলতে কোশ্চেন. Class struggle and social revolution. In solo model, without technological progress, long run growth in per capita income कौन हुए? Continues indefinitely, is zero, increase exponentially, or decrease over time. In the solo model, without technological progress, long run growth in per capita income केते हो जिवो? जीरो हो जिवो. Harrod-Domar model mostly concerned with agricultural development, capital accumulation and output growth ना political institution ना international trade. ये कौन है जो? Harrod-Domar. Harrod-Domar होगा capital accumulation and output growth. हेड काउंट रेशियो कौन मेजर करे? डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम.
हेड काउंट रेशियोटा कौन मेजर कर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी गैप रेशियो कौन मेजर करिवो नंबर ऑफ पुअर पीपल एवरेज शॉर्टफॉल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन ना इनकम इनइक्वालिटी ना नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल पॉवर्टी गैप रेशियो है कौन एवरेज शॉर्टफॉल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन स्क्वायर पॉवर्टी गैप consider only the poorest of the poor, the severity of poverty, absolute poverty line, total income inequality. The square poverty gap consider square poverty gap कौन करिवो severity of poverty. FGT index is named after FGT index के का ना को नहीं करा है FGT index FGT index कोटा फोस्टर ग्रेज थॉरबैक इनकम इनइक्वालिटी के देखैतला लॉरेंज कर्व गिनी कोफिशिएंट कोठु कैलकुलेट करा जाए इज डिराइव्ड फ्रॉम गिनी कोफिशिएंट कोठु बाहरिबो लॉरेंज कर्व रो बाहर गिनी कोफिशिएंट कौन हबो कुजनेट इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट इनइक्वालिटी फर्स्ट falls with rises with growth na rises then falls with growth na constantly rises na constantly falls inequality कौन हुए inequality कौन हबो प्रथमे इन्वर्टेड यू माने कौन प्रथमे राइज करिवो तापरे फॉल करिवो है ना इन्वर्टेड यू है ना इन्वर्टेड यू हेले प्रथमे राइज करिवो तापरे फॉल करिवो ग्रोथ विदाउट रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी तो कौन कहबा ग्रोथ विदाउट रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ग्रोथ विदाउट रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी तो कहबा ट्रिकल डाउन ग्रोथ A major policy option to reduce poverty includes increasing indirect tax, agricultural subsidies, strengthening labor-intensive sector, reducing public spending. कौन करवा strengthening labor-intensive sectors. Which sector is traditionally the backbone of developing economies? डेवलपिंग इकोनॉमी सब का ऊपर डिपेंड करछन्ती का ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व reducing agriculture production, mechanization and better irrigation, eliminating farming, increase rural unemployment. कौन है जीवन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ता माने mechanization and better irrigation. A major barrier to agricultural development is high technology use, poor land tenure system, high investment rate, export promotion. A major barrier to agricultural development कौन होगा हमारा poor land tenure system. Industrialization helps economic development by
reducing productivity, increasing unemployment, diversifying the economy, lowering investment. कौन करे industrialization केमती help करे? Industrialization केमती करिबा? By diversifying the economy. Interdependence between agriculture and industry means agriculture consumes industrial goods and vice versa. Agriculture alone grow, industry alone grow, they grow independently. कौन हबा? Interdependence. था माने agriculture industry ऊपर dependent और industry भी agriculture ऊपर dependent. Which model shows complementarities between agriculture and industry? किए शो करथिला? Complementary between agriculture and industry को model शो करछि? कोटा हमनो एटा हो रानिस 5 model. Terms of trade between agriculture and industry refers to ratio of agriculture to industrial prices. Now wage difference, tariff structure, import substitution. कोटा हो एटा? Ratio of agricultural to industrial prices. In an agrarian society, market often function efficiently under perfect competition with imperfection and interlinkage through stock market. Agrarian society market often function with imperfection and interlinkage. Interlinked agrarian markets typically combine land labor, na credit and goods, na credit land labor output market, only output and labor. Interlinked agrarian markets typically combine कौन है जीवा? Credit land labor output. Agriculture's role in early development includes providing labor to industry, raising capital, supplying food, na all the कौन होगा ठीक? All the above. The dual economy model that explains rural urban migration is developed by dual economy model. Dual economy model that explains rural urban migration के डेवलप करथिले? गेला हमरा लेविस, आर्थर लेविस. Institution in economic development refers to only banks, na formal and informal rules governing behavior, na school and college, na government office only. Institution in economic development. ये क्या हुआ जे? Formal and informal rules governing behavior. Good institutions are characterized by corruption and inefficiency, clear property right and rule of law, monopolies, absence of competition. Good institutions are characterized by कौन है जी? Clear property right and rule of laws. One prerequisite for a sound institutional structure is lack of judiciary, secure property right, excessive government control, unregulated market. कौन होगा ठीक? Secure
property right. Aggregate governance index measures level of corruption only, economic performance, overall quality of governance, agricultural output. Aggregate governance index measure कौन मेजर करिबो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस. Property rights are essential for development because they create uncertainty and discourage investment, encourage investment and innovation, and decrease market transaction. कौन होगा property right? Property rights are essential for development because they encourage investment and innovation. Risk of expropriation refers to government protection of private asset, threat of government taking private asset without compensation, growth of industries, development of property laws. ये कौन है जो threat of government taking private assets without compensation. Democracy is believed to promote economic development by centralized control, inclusive institution and accountability, reducing people's participation, discouraging innovation. ये कौन है जो inclusive institution and accountability. Market contribute to economic development through efficient allocation of resources, promoting monopolies, widening inequalities, ignoring consumers' demand. Market केमती contribute करछि economic development को through efficient allocation of resources. Market failures occurs when market works perfectly, na resource allocation is efficient, na market cannot allocate resources properly, na government regulate too much. कौन होगा एठी होगा market cannot allocate resources properly. A major cause of market failure in LDC, lower developed countries, is full information availability, externalities and monopolies, perfect competition, high technological development. Major cause of market failure कौन होगा externalities and monopolies. Private market requires which cultural or institutional condition to function well? Private markets require which cultural institutional condition to function well? Widespread corruption, enforcement of contract, lawlessness, na price control. कौन है बेटा? Enforcement of contracts. Market facilitating conditions include good legal system, weak government, random policy making, unstable banking system. Market facilitating condition, good legal system.
one limitation of markets in developing countries is perfect competition, lack of credit institution, abundance of skilled labor, high productivity. कौन है जो lack of credit institutions. Corruption affects economic development by encouraging investment, enhancing efficiency, discouraging foreign and domestic investment, reducing inequality. कौन है जो discouraging foreign and domestic investment. Which sector is most vulnerable to corruption in developing countries? Private education, public procurement and infrastructure, manufacturing industries, private retail. कोथि बेसी करप्शन होता है? Public procurement and infrastructure. One way to tackle corruption is reducing transparency, strengthening institution and accountability mechanism, increasing bureaucratic hurdles, decreasing access to information. One way to tackle corruption. कौन होगा? Strengthening institution and accountability mechanism. Poverty right institutions mainly protect government only, private business, individual, labor union, now multinational corporation. Poverty right mainly protect private business and individual. Which of the following is not a feature of good institution? Which of the following is not a feature of good institution? Strong rule of law, na inclusive economic policy, na secure property right, na monopolistic control. Not a feature of good institution. कौन होगा? Monopolistic control. Poor quality of institution leads to efficient investment, lower economic growth, high human capital formation, stable financial markets. कौन है जी बेटा? Poor quality of institution leads to lower economic growth. Institutional reforms are important. Institutional reforms are important because they discourage competition, encourage innovation and stability, promote monopoly, increase inflation. Because they encourage innovation and stability. पहले जे जन अच्छा तुम को कॉलेज रे पढ़ुछ सब ग्रेजुएशन टिके लिखिदेल को कॉलेज नाटा लिखिदेव आड्रेसटा लिखिदेव मैंने पर्टिकुलर प्लेस रो नेम कि डिस्ट्रिक्ट रो नेम जा एसएसबी कॉलेज महाकालपड़ा नो जाजपुर ऑटोनॉमस एनसी ऑटोनॉमस
पटाउंडे कॉलेज, कोचेंदा डिग्री कॉलेज कोचेंदा संबलपुर यूनिवर्सिटी अंडर रे, उपेंद्र नाथ कॉलेज सोरो इस्पात ताले राउरकेला, बिजू पटनायक डिग्री कॉलेज केंद्रापड़ा, मॉडल डिग्री कॉलेज नयागढ़, एसएसबी कॉलेज महाकालपड़ा, पटाउंडे कॉलेज वुमेन्स डिग्री कॉलेज जलेश्वर, तमर आउ बाकी रहिला फोर्थ सेमिस्टर रो माइक्रो मैक्रो दीटा बोधे बाकी रहिला। तुम अंतेई कॉलेज रे तुम पास सार अच्छा हापी सार अच्छा भल ना कौन आम तो हापी बोली जानिछु। देवदत्त बेहेरा हौ तमर रहिला फोर्थ सेमिस्टर माइक्रो रहिला मैक्रो रहिला हला दीटा पेपर रहिला। आउ जदि कौन दरकार कहब नहले दीटा पेपर देखा 2 दिन रे सारदबा। आज केते हला आज डेट हला 29 आउ 2 दिन भितर सारिबा हला काली पर दिन भितर आ दीटा पेपर सरले 14टा कोर पेपर सरिबो। तापर जदि मॉक टेस्ट कथा जो कहउतलो देखिया करबा। क्वेश्चन हार्ड के इजी क्वेश्चन जेहेतु नेगेटिव मार्क अच्छी क्वेश्चन टिके इजी हो पारे। टाइम कम अच्छी 40 सेकेंड पाखापाखि टाइम मिलिबो 40 सेकेंड पाखापाखि टाइम मिलिबो तेणु जदि कष्ट क्वेश्चन आसिला टाइम हबनी करिया पई ता सहित नेगेटिव मार्क अच्छी तेणु क्वेश्चन टिके इजी हो पारे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोटा को कहउछ इम्पोर्टेंट हम तो 14टा को पेपर पढ़ी देछि से 14टा पेपर रो टिके देखि दियो आ ए कोर पेपर सरी गला परे मु गोटे दिन टॉपिक गुडा तुम कहि देबी को टॉपिक रो बेसी आसुची क्वेश्चन आ सर जाऊ 2टा सर जाऊ माइक्रो मैक्रो 2टा सरी जाऊ
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଆଜି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଇଏ ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିଲେ ମିନିମମ୍ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ସ୍କିମ୍ ତ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ କଭର କରିହେବନି। 2014 ହେଲା ନା, ଯେବେଠୁ ତମ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସେବେଠୁ ଦେଖିବା ଯାହା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି 2014ରୁ 24 ଯାଏଁ, ସିଏ ବି ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ରହିବ। ମ୍ୟାଥରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ତମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖିଦେଉଛ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଲେଖି ହେଉନି। ଯେତେ ଇଜିଲି ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଦେବ, ତମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇକ୍ୱେସନ୍ ସବୁ ଲେଖିବା, ତାର ଅଲଗା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସୁଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ। मैक्सिमम क्वेश्चन आसिबो इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो मैक्रो, ये 3टा पेपर मैक्सिमम थिबो क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो रो मैक्सिमम क्वेश्चन। तापर रहइबो तमरा स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स मिसिकी 15 पर क्वेश्चन रही जिवो, डेवलपमेंट रो 10 पर क्वेश्चन रहिबो, रिसर्च मेथोडोलॉजी रो 5 ରୁ 7 भितर क्वेश्चन रहिबो। शहेटा ना एथर टी क्वेश्चन बढ़िबो, सब थर 70-80 पड़ुथला क्वेश्चन, एथर 100 क्वेश्चन आसीबो। 100 क्वेश्चन जेहेतु आसीबो तेणु क्वेश्चन टिके बढ़िबो। डीएससी पेपर सेमती किछि न थाए, कहि हबनी किछि। डीएससी पेपर बेले बेले किछि क्वेश्चन पकाए नहले जमा पड़ेनी एई भलिया। जदि आसिला अल्प किछि क्वेश्चन आसीबो। डीएससी पेपर कोन रहउची, तमे रिसर्च मेथोडोलॉजी सहित रहुची कार लिंक रहुची कहलो तमर अछि इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी सहित सेथरु किछि क्वेश्चन आसी पारे। रिसर्च मेथोडोलॉजी रे जेमती सपोज हाइपोथेसिस हला, एरर गुडा हला, सेगुडा सब रिसर्च मेथोडोलॉजी रे रहउची। हमर एठी सिलेबस रे रिसर्च मेथोडोलॉजी रे सेगुडा न देई कि देइछि इकोनोमेट्रिक्स रे, तेणु बेले बेले से किसी क्वेश्चन पकाए से भाया मिसी मासिक आसे। आ सब जो पेपर सब कौच डीएससी पेपर गुड़ा मुझे आर वर्ष सब अपलोड करी, मत देखी दियो, खोजी दियो, जदि न पाइब मत कह कमेंट करदब, जेकोसी वीडियो गोटे मु लिंक पठेदेवी। सब डीएससी पेपर अपलोड हो बुझिपार अच्छी सेम सिलेबस तो आर वर्षर जहाँ थिला ए वर्षर से सिलेबस तो चेंज होनी, तेणु जहाँ डीएससी पेपर जहाँ दरकार आ टाइम नहीं सब करने एग्जाम हो तेणु प्रिपरेशन जिते कले भी डर लगे, डर जी हम से कर बेसी नेगेटिव मार्क अच्छे, बेसी आडू साडू मारबनी। जदि 50 पर आसूची 100 रु ताहले भी चलिबो। क्वेश्चन रो स्टैंडर्ड देखे कि क्वेश्चन जदि इजी थिबो ताहले कट ऑफ टिक अधिका जाई पारे, नहले क्वेश्चन जदि डिफिकल्ट आसिला तो कट ऑफ भी कमिबो। तेणु जमते नेगेटिव रे बेसी न कटू, से हिसाब रे देखि कले ठीक हो। 50-60 रहिले भी भल जगह मिलिबो। पब्लिक इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रो आस जाई पारे, माने अल्प क्वेश्चन सेमते नुह जे बेसी क्वेश्चन आसीबो। पब्लिक इंटरनेशनल त पढ़ी थिबो एबे ना, 5th और 6th सेमेस्टर रे पढ़ी थिबो पब्लिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। एठो अल्प अल्प किछि क्वेश्चन देखिले जानि परिबो, सेमते किछि नुह जे एते डिफिकल्ट क्वेश्चन बुझी होबनी। 6th सेमेस्टर रे तो पढ़ाई थिबो।
ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ। ଆଉ 5-6 ଦିନ ରହିଲା, 5-6 ଦିନ ଆଉ ରହିଲା ହାତରେ। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ, ଯେତିକି ପଢ଼ିଛ ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପଢ଼ିପାରୁଛ ପଢ଼, ନହେଲେ ରିଭିଜନ୍ କର। ଠିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ନ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲ। ଯେଉଁଟା ନ ଆସୁଛି ସିଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବି ଠିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ସିଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କରେ ପୁଣି କଟିବ, ସିଏ ତ କଟିବ ଭୁଲ ହେଲା ପୁଣି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କରେ କଟିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ନ ହଉ, ସେଇ ହିସାବରେ କର, ଭଲ ହେବ। ଓକେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଆଉ ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖନି, ଯାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଅ ରଖିଦିଅ।